चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, the first step in God realization, and text 11. एतद् निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां निरन्तम् हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन् निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम् योगिनां निपनियन्तम् हरेर्नामानुकीर्तनम्. So translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation as follows: O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authority is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. So means here he Srila Sukadeva Goswami is the just now he has just begins to speak Srimad Bhagavatam from the first from second canto, and just he is glorifying the question asked by Parikshit in the first sloka, and then second he is explaining difference between Grihimedi and Grihasthas, and he is explaining the process that process is एतावान सांख्य योगावाम स्वधर्म फलिनिष्ठया जन्मलाभ पराम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति. That is the sixth sloka, and this is too much important, and in the beginning only he is just mentioning in this shloka that what is the important, that constant chanting Hare Namanam Kirtanam. So Srimad Bhagavatam is basically talks on the glories of the holy name, and how we could conclude on this, because beginning of this cantos, means this beginning of Srimad Bhagavatam, he is saying Hare Namanam Kirtanam. Now in the Srimad Bhagavatam there is 12 canto, means middle canto is 6th canto, and in 6th canto Ajamil story comes, and in middle Srimad Bhagavatam also glorifies the holy name, and again in the last, in the 12th canto, last verse is Srila Sukadeva Goswami just concluding with the holy name of the Lord only. So this how we can understand that again and again Srimad Bhagavatam is glorifying the holy name of the Lord. So point is that how we can understand the glories of the holy name, that Srila Prabhupada is explaining very nicely. He is just explaining how to proceed from the neophyte stage to perfectional stage. That has been described in this very good
the Bhakti Vedanta pocket. Translation is means this sloka actually wanted to tell that for whom holy name is there, and who is qualified to chant the holy name, or who should chant the holy name. So here he is telling that success for all, and who are they? Or first they are ready, those who are free from material desires. Holy name is meant for whom? First, who are actually free from the all material desires. That is what? Pure devotees. Someone can ask, if I will become pure devotee, then I need not to chant the holy name. No. Holy name is for pure devotees of the Lord also. Yes. Those who are desirous of all material enjoyments. For karmis. For karmis also, who have material desires, holy name is meant for them also. And last, also those who are self-satisfied by the dint of transcendental knowledge. Means who are actually in the process of self-realization, mixed devotees who are not karmi or who are not actually devotees. Means now yet they haven't got perfectional stage. Means struggling sadhaka like us. So for all, holy name will give success. And how? If karmis will chant the holy name, then gradually he will be free from all material desires, and he will able to elevate himself to the next stage, which is mixed devotional stage via sadhana bhakti. And gradually he will progress. And if mixed devotees, intermediate, second phase devotee who are in between karma and karmis and bhaktas, if they will chant the holy name, then they shortly and gradually they will attain perfection. Because they are doing to elevate themselves on a perfectional stage. So they will attain it from intermediate to they can go to the perfectional stage. And pure devotees, if they will chant the constantly holy name, then they will also progress in terms of they will able to taste transcendental mellows more and more and more, and they will able to relish highest mood of devotion which mood Brajvasi have, or for which Mahaprabhu had came to give that transcendental sweet mellows. They will attain that. And they will attain, and then every day, every time, Pratipadam Purnamrutam Aswadanam. Then they will able to see transcendental pastime of the Lord, or gradually they will become qualified to participate in that transcendental holy pastimes with Krishna.
Yeah. So this our translation is. And Purport is describing the graduation to perfection. In the previous verse, great necessary for attachment to Mukunda has been accredited. There are different type of persons who desire to attain success in different varieties of pursuits, which we have described now. Generally, the person materialistic who desire to enjoy fullest extent of material gratification. Next to them, them are transcendentalists who have attained perfect knowledge about the nature of material enjoyment and thus are aloof from such an illusionary way of life. More or less, they are satisfied in themselves by self-realization. Above them are devotees of the Lord, who neither aspire to enjoy material world or nor desire to get out of it. They are after the satisfaction of the Lord. See Krishna. In other words, the devotees of the Lord don't want anything on their personal account. If the Lord desires, devotee can accept all sorts of facilities, and if the Lord does not desire this, the devotee can leave aside all sorts of facilities, even up to the limit of salvation, nor are they self-satisfied because they want the satisfaction of the Lord only. So there is the devotees. Devotees, here Prabhupada is describing the difference between karmis, jnanis and bhaktas. You know, jnanis are jnanis take satisfaction in the self only. Means they are seeing the Paramatma and they have actually on the Jnani platform there is a Anand in Jnana, that in which Jnana different, which knowledge actually gives discriminations between matter and spirit. They are taking bliss in that. Yeah. And because it's transcendental knowledge and Vedas comes from the Lord, so in process of taking knowledge, there is some kind of happiness. Yeah. So they are actually renounce it. Karmis are totally totally understand that they are only enjoy, and Jnanis are used to think that we have to renounce these all things, and devotees are above all. Devotees don't want to enjoy or don't want to live. They actually want to satisfy Krishna, and they actually want to give satisfaction to the Lord because they see things in their original form. While they want to use all material energies, all material facilities in the service of the Lord, because Isavasyam idam sarvam. All things belong to that Supreme Lord only. So this is the perfectional stage, because this world is meant for Krishna's enjoyment, not for our enjoyment. This knowledge devotee has, and based on this knowledge devotee acts, and that's why and therefore devotees only want to satisfy the Lord, because they are actually spiritual scientists. They are able to see who is behind all these things and whose energies are
Okay. So moving forward. In this work, Srila Sukdev Goswami recommends the transcendental chanting of the holy name of the Lord. By offenseless chanting and hearing of the holy name of the Lord, one becomes acquainted with the transcendental form of the Lord, and then with the attributes of the Lord, and then with the transcendental nature of his pastime, etc. Here it is mentioned that one should constant chanting of the holy name of the Lord after hearing it from the authority. Yeah. So, Srila Prabhupada is telling, so, first Prabhupada explained that first line of this particular verse, that Sukdev Goswami is talking these three personalities. Obviously, I just explained in another context. I just explained in a devotional context. In that process which discriminate between neophyte and perfect devotees, means Kanishta and Madhyama. Yeah, we have seen in that context which I gave explanation. That is also right. And where what Prabhupada is talking about, that is also in the context. Yeah, but because we have theme, our sadhana bhakti series, the chanting of the holy name, that's why I also described in that particular context. Okay. So, and second line now, Srila Prabhupada is talking that Sukdev Goswami is recommending constantly chanting of the holy name. And he is telling that by hearing holy name, he is describing now the process. Gradually, you will realize the form of the Lord. You will be able to develop attraction for the transcendental form. Then attributes means his qualities. We will be able to gradually attract with the qualities of the Lord, then pastimes of the Lord. And this is what holy name will give us. And that is the goal. Yes. So now he is actually describing process from neophyte to perfection state. And first thing is hearing of the holy name gradually promotes one to the stage of hearing about his form. Hearing of the holy name, that is the first stage of neophyte. What he should do or he must do while chanting? Only hearing of the holy name. You have to simply hear, not to think anything else. Yeah. This is the first, hearing of the holy name. Gradually promotes to the stage of hearing about his form. When you will hear the holy name, then you will be able to understand or relish that his form. And Bhagavatam also describes that. Yeah. Badha Piram Natavara Vaku and that shloka.
10, 20, 21, 5. Yeah. That Krishna has peacock feathers on his head. Yeah. And is playing the flute and all this. About his attributes, his pastime, and so on. Thus, the necessity of chanting of his glories develop successively. This process is recommended not only for the successful execution of devotions but also even for those who are materially attached. Yeah. For pure devotees and for the karmis or who are gradually trying to elevate themselves on the Shuddha Bhakti platform. According to Srila Sukadeva Goswami, this way of attaining success is an established fact, concluded not only by him but also by other previous acharyas. Prabhupada is establishing the authorities. Therefore, there is no need of further evidence. There is no need of further evidence. We are concluding or we are accepting and we are sharing this with too much confidence, with utmost confidence. The process is recommended only for the progressive students in different departments of ideological success, but also for those who are already successful in their achievement as a fruity workers, as a philosophers, or as a devotees of the Lord. So Prabhupada included all in the current terminologies, that karmis, jnanis, who are karmakandis, who are jnanis, doesn't matter who are they and what are they doing in the name of spirituality. Holy name is meant for all. Srila Jiva Goswami instructs that chanting of the holy name of the Lord should be loudly done and it should be performed offenselessly as well, as recommended in the Padma Puran. One can deliver himself from the effects of all sins by surrendering himself unto the Lord. One can deliver himself from all offenses at the feet of the Lord by taking shelter of His holy name. We can remove our all offenses by taking shelter of the holy name. But one constant protect himself if one commits an offense at the feet of the holy name of the Lord. One cannot protect himself if he continuously, after taking shelter of the holy name, after receiving initiation, still he committing offense to the holy name, then he will not be able to progress, or holy name will not be able to protect him. Such offenses are mentioned in the Padma Puran as being 10 in number. So originally, if one asks for the references that where these 10 offenses are given into the scriptures, is it concocted by or made by Gaudiya Vaishnavas? No. It is mentioned in the Padma Puran itself. So, first offense is to vilify the great devotees who have preached about the glories of the Lord. The second offense is to see the holy name of the Lord in terms of worldly distinction. The Lord is proprietor of all universe and therefore He may be known in different places by different names. But that does not in any way qualify the fullness of the Lord. Any nomenclature which is meant for the Supreme Lord is as the holy as the other, because they are all meant for the Lord. Such holy names are powerful as the Lord, and there is no bar for anyone in any part of the creation to chant and glorify of the Lord by the particular name of the Lord as it is locally understood.
They are all auspicious, and one should not distinguish such names of the Lord as a material commodities. Here Srila Prabhupada is mentioning that primary names and secondary names. All names have equal potencies. Obviously, there are some difference also. Primary names, which comes from the spiritual world, just like the Govind, Madhava, Mukunda, Murari, Balaram, Ram, that's name of the spiritual world, and it's a primary names. These names gives able to give us prema. But when Lord comes in material world, and devotees also gives the name Paramatma, Srishtikarta, Srishtipati. These all names gives will able to give us mukti, but these names will not able to give us prema. You will chant Paramatma, Paramatma. You will have a mukti, but you will not have a prema. Okay. There are some secondary names. Yeah. The third offense is to neglect the orders of the authorized acharyas or spiritual masters. The fourth offense is to vilify scriptures or Vedic knowledge. The fifth offense is to define the holy name of the Lord in terms of one's mundane calculations. The holy name of the Lord is identical with the Lord himself, and one should understand the holy name of the Lord is to be non-different from him. The sixth offense is to interpret the holy name. The Lord is not imaginary nor is holy name. There are persons who with a poor fund of knowledge who think the Lord to be an imagination of the worshipper, and therefore think his holy name to be imaginary. Such a chanter of the holy name of the Lord cannot achieve desired success in the matter of chanting of the holy name. The seventh offense is to commit sins intentionally on the strength of the holy name. Prabhupada is very beautifully explained. Committing sins intentionally on the strength of the holy name, that I will commit sin and holy name will protect me. In the scripture it is said that one can be liberated from the effects of all sinful actions simply by chanting of the holy name of the Lord. One who takes advantage of this transcendental method and continues to commit sins on the expectations of neutralizing the effect of sins by chanting of the holy name of the Lord is the greatest offender at the feet of the holy name. Such an offender cannot purify himself by any recommended method of purification. In other words, one may be a sinful man before chanting of the holy name of the Lord, but after taking shelter of the holy name of the Lord and becoming immune, one should strictly restrain oneself. One should strictly restrain oneself from the committing sinful acts with the hope that this method of the chanting of the holy name will give him protection. The eighth offense is to consider the holy name of the Lord and his chanting method to be equal to some material auspicious activities. There are various kind of good works for material benefits, but the holy name and his chanting are not mere auspicious holy services. Undoubtedly, the holy name is holy service, but he should never be utilized for such purpose. Since the holy name and the Lord are one and the same identity, one should not try to bring the holy name into service of mankind. The idea is that the Supreme Lord is the supreme enjoyer. He is no one's servant or order supplier. Similarly, since the holy name of the Lord is identical with the Lord, one should not try to utilize the holy name for one's personal service. The ninth offense is to instruct those who are not interested in chanting the holy name of the Lord about the transcendental nature of the holy name. If such instruction is imparted to an unwilling audience, the act is considered to be an offense at the feet of the holy name. The 10th offense is to become uninterested in the holy name of the Lord even after hearing the transcendental nature of the holy name. The effects chanting of the holy name of the Lord is perceived by the chanter as a liberation from the conception of false egoism. False egoism is exhibited by thinking oneself to be
the enjoyer of the world, and thinking everything in the world to be meant for the enjoyment of oneself only. The whole materialistic world is moving under such false egoism of I and mine. But the factual effect of the chanting of the holy name is to become free from such misconception. So that was a purport given by Srila Prabhupada. Now we will see one by one offenses and what are the solutions to rectify it, and how we can save ourselves from that 10 offenses. Actually, this all solution very beautifully, nicely explanation given by Srila Bhaktivinoda Thakur in his commentary on Shiksha Ashtakam. It's very nice, but there are 3 stages in the chanting of the holy name: Namaprad, Namabhas, and Shuddha Nam. So, if how, now question comes, how one can elevate himself on the platform of Namabhas from the Namaprad. So, it is mentioned that consciously avoiding, try to consciously avoiding 10 offenses. Consciously you are means we are. If saving ourselves from the committing offenses very consciously, we have to become conscious. Then only we can become Krishna conscious. First, we have to become what? Conscious. Conscious about the offenses. If you are very conscious about the offenses, then only there is a hope to become a Krishna conscious. Consciously, we have to avoid 10 offenses. Consciously. We have to think, oh, I have committed the offense. And we have to see the root cause of that offenses. Why we are committing. Yeah. See, over a period of time, when we think that what are that offenses? Offenses means we are disrespecting. Offenses means we are not showing respect. We are disrespecting. See, first offenses, we are disrespecting Vaishnavas. We are disrespecting spiritual masters. We are disrespecting the scriptures. Yeah? Means, offenses means see the spiritual things with material visions. That is the offenses. Means we are not able to see spiritual things. We are seeing spiritual things on a material platform, on a mundane platform. We are seeing the things materially. Because of our material consciousness and materialistic reason, we are committing such offenses at the lotus feet of the Holy One. Because of that. Yeah. And if consciously avoid these 10 offenses and begging and praying in the mood of humility, then he will gradually elevate himself to the Namabhas. And on Namabhas,
if one still became more conscious for the offenses, about the offenses, he is very conscious, and unconsciously now he is able to avoid, unconsciously now he is able to avoid offenses. Unconsciously means now he is fit. Now he is in his mind it's a fixed up. Oh, if I will shout to the devotees, then it will consider an offense. So I will not do it. Yeah. That is consciously avoidance of the offenses. Another thing is, if gradually if we will practice like this, before committing any act, if we will think on it, that is called concept, that is called goodness. If we will think on it, then over a period of time, because of such practices, because of such kind of practices, even we are not aware of the situations, or we are not conscious, just we woke up and some devotees is shouting and yelling, or means they are talking. If we are taking rest, and in the same room they are talking unconsciously, still we will wake up and we will unconsciously approach them that, can you reduce the voice? So I can rest properly, or you will leave that place for the devotees. Or you are not very conscious, but still you are not thinking to offend. That's happening unconsciously. That is Namabhas stage. And by continuously doing this, one elevates himself on the platform of pure being. Yeah. See, if you will analyze the Bhagavad Gita, then what Krishna is speaking, Antakale cha mameva smaran mukta kalevara. So in that shloka, Krishna is mentioning that it is not like that only you have to remember at the end. But in that shloka, if you will read very nicely, then you will able to see he's mentioning that I forgot that word I have just read. In that word, it means that Krishna is recommending the practices to remember me always. He is in that Antakalichimaveva. Krishna is telling that by practicing only you will able to remember me. See, in Karma Yoga section is in last that lust. Krishna is explaining enemies of the Jnanis is lust only. Yeah. So what Krishna is giving solution of lust? Abhyas and context. Abhyas means practices. And in this chapter also Krishna just giving solution what? Abhyas. Means whatever you want to attain, whatever you want to do, Krishna giving a solution, that is practice.
Practice makes you perfect. So more or less, Krishna is just talking practices. So here we can also understand that thing is anything we want to achieve in our life, any things we want to improve in our life, that is comes through only practices. Yes, there is no another option. Yeah. So practices. So trying to avoiding the offenses, that is also practice. And that practice we have. This much we have. Yeah. So let's see. Yes. So before the first offenses, I would like to read the false lies we think. Here it's a basically first offense. Here Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur talking. The best of all persons thinks himself to be lesser than all others. Best of all person is thinking himself to be lesser than others, is the best person among the all mankind. Why should a person be anxious to pry into the defects of others when he does not seek to scrutinize his own conduct? Why person need to think about other faults when he himself have a faulty vision? Himself is a faulty person. The acts and expressions of the Vaishnavas cannot be understood even by the wise. You know, Vaishnava Tiya Mudra Vigena Bujaye. You cannot understand the act done by the Vaishnavas. Yes? So we have to think that we cannot judge. You know? Yeah? We cannot judge. Yeah, see? Classic example is that Gadadhar Pandit and Pandit Vidyanidhi. Yeah? जब पंडित विद्यानिधि नीलांचल में आए तो उन्होंने बहुत सुना था कि मतलब सुना था कि पंडित विद्यानिधि बहुत महान भक्त है वगैरह, बहुत अच्छे से उन्होंने सुना। तो वो उनके बोले कि चलो महान वैष्णव पे दर्शन करके आते हैं, उनसे थोड़ा कथा वथा श्रवण करें। तो देखा तो पंडित विद्यानिधि एकदम रात सी वैभव ठाट बाट के साथ बैठे हैं, नृत्य कर नृत्य कर रहे हैं और कुछ पी रहे हैं। बोले कि ये क्या है, ये महान वैष्णव है। सुना तो कुछ और ही थे, नृत्य के नाच गाने देख रहे ये तो, और उनका वेशभूषा तो देखो कहाँ से वैष्णव लग रहे हैं। फिर मुकुंद जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए जो गाते थे, जब महाप्रभु संकीर्तन करते थे तब मुकुंद दत्त क्या करते थे, महामंत्र गाते थे। तो मुकुंद ने बोला कि आप क्या करो, ये बढ़ा पीड़ों वाला श्लोक बोले कि गाओ। उन्होंने भगवान की सुंदर नहीं, बढ़ा पीड़ों वाला श्लोक नहीं, उन्होंने बोला कि भगवान अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, कि कृष्णा कितने दयालु है कि पूतना उनको मारने आई थी तो भी उनको माता का स्थान दे दिया। वो वाला जो श्लोक शुद्धदेव गोस्वामी ने भागवत में कोट किया, बोले कि वो श्लोक कोट करो। तो जैसे ही वो श्लोक कोट किया, पंडित विद्यानिधि भाव में आ गए और नीचे सिंहासन पे से नीचे गिर के बेहोश हो गए।
तब उनको पता चला कि बाप रे बाप, श्लोक सुन के ही भाव आ गया इनको, दिखा तो कुछ और ही रहे थे। हाँ, तो बोला कि मैंने इनके बारे में गलत सोचा, तो मैं कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूँ। तब फिर उन्होंने रेकमेंड किया कि आप एक काम करो, आप पंडित विद्यानिधि से दीक्षा ले लो। तब गदाधर पंडित ने पंडित विद्यानिधि प्रभु से दीक्षा लिया। और पंडित विद्यानिधि कौन है? कृष्ण लीला में वृषभानु महाराज, राधा रानी के पिता। और गदाधर पंडित कौन है? वही है जो कृष्णा ने राधा रानी का भाव चुरा लिया, उसके बाद जो राधा रानी बची वो है गदाधर पंडित जी। कहने का अर्थ है कि हम किसी वैष्णव को अब उनकी वेशभूषा से, उनके बिहेवियर से, उनके एक्ट से, सीनियर जूनियर, किसी इक्वल, किसी को हम क्या नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते हैं। ये पूरा दिन सोता रहता है, खोता रहता है, या जो भी, because we cannot understand his feelings for the Lord, how much he have a love for the Lord. Yeah, we are apparently seeing the faults. That's why means Tirupati Balaji have closed his eyes. Dwarkadis also is closed his eyes. Means वो लोग भक्तों के दोष देखना नहीं चाहते, वो भक्तों के दोष नहीं देखते हैं। और कुछ किया तो जगन्नाथ जी जैसी बड़ी बड़ी आंखें, तो जगन्नाथ बड़ी बड़ी आंखों से भगवान के क्या देखते हैं, सॉरी भक्तों के क्या देखते हैं, गुण देखते हैं, और दोष के लिए आंखें बंद कर देते हैं। Let us not be misled by the apparent sight. क्या? Let us not mislead by apparent sight. Many a person has mistaken parable for a pear, a snake for a rope, evil for a good, by falling victim to delusion by railing on apparent sight. When fall into other misguide dilutes you, you should have patience. Be introspective and find the faults in yourself. Know that others cannot harm you unless you harm yourself. Sri Chaitanya's teachings. Yes, others cannot harm you unless you want to harm yourself. Means others will think, but if you are not glorifying others, you are not able to see the qualities in others, and only you are able to see the faults, then you will think it and you will harm yourself. Some people think if devotees commit forbidden acts, it is not offensive to criticize them, since it is simply stating facts. In his commentary on Srimad Bhagavatam, Sridhar Swami says, Nindanam dosh kirtanam, whether it is true or not, narrating the faults of a sadhu constitutes blasphemy. बोले कि कोई भक्तों के बारे में निंदा करना, चाहे सही कर रहा हो चाहे गलत कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, पर वो क्या है, गलत ही है. Bhagavatam warns that hearing blasphemy of the devotee will send one to hell. तो कि निंदा सुनेगा वो नरक जाएगा. निंदनम भगवतस्य श्रवणस्य तत्परस्य जनास्य वा ततोपि नाप्यति यः सोपि यथा अदे सुकृतरे से च्युतः. श्रीमद् भागवतम 10:74-40. Anyone who fails to immediately leave the place where he hears criticism of the Supreme Lord and his faithful devotee will lose his piety and fall down to hell. By hearing blasphemy, we will lose our sukrutis, spiritual sukrutis. But should not a sadhu be corrected if he is really guilty? Rectification is the duty of a guru or other potent guardians, not the ordinary sadhaka. One will only in a
incur an offense by engaging fine folding and discussing someone's faults with others. In this regard, the Bible says, "Judge not, lest you be judged." Person who don't blaspheme the Vaishnava attain Lord Krishna. They attain pure love and devotion for the Supreme Lord's lotus feet. The only thing obtained by blaspheming Vaishnava is sin. Thus, one should never blaspheme the Vaishnava. Krishna easily delivers those who chant even once his name without blaspheming anyone. And Mahaprabhu personally comes to take that soul. First offenses, पहला अपराध, उसका रेक्टिफिकेशन क्या है, पहला अपराध देखा हम, तो उसका रेक्टिफिकेशन हम कैसे सुधार सकते हैं। अभी निंदा हो गया, क्या करें बताओ, होता रहता है, तो क्या करेंगे, सुन लिया अभी क्या करेंगे। ऑफेंसिंग वैष्णवा इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफेंस। सबसे बड़ा अपराध क्या है, वैष्णव अपराध। Although Jagai and Madai committed every possible sin, they never committed sin of blaspheming Vaishnava. तो कोई बोल सकता है जगाई मदाई का उद्धार क्यों हुआ, पर एक उन्होंने कभी कोई वैष्णव की निंदा नहीं की, इसलिए उनका उद्धार। कितने भी पापी थे, भगवान पापी का उद्धार कर देंगे, अपराधी जो निंदा करते हैं उनको उद्धार। चबरा Hari Naam Chintamani says one can nullify this offense by repenting bitterly and falling at the feet of the offended devotee. मतलब बहुत पश्चाताप होना चाहिए हृदय में, और वो वैष्णव के चरणों में गिर के हृदय पूर्वक माफी और क्षमा याचना करनी चाहिए। One should sincerely beg forgiveness with tears in the eyes and regret in the heart. क्या इतना पश्चाताप होना चाहिए कि आंख में से आंसू आने चाहिए, और दो हाथ जोड़ के रोते हुए हृदय से व्यक्ति माफी मांगे। One should then declare himself a fallen wretch in need of the Vaishnava mercy. The kindly Vaishnava will surely absolve the offense. Then and then वो हमारा वैष्णव अपराध जाएगा। इतना पश्चाताप होगा ना, तो हम माफी मांग भी देंगे, व्यक्ति माफ भी कर देंगे, पर जितना पश्चाताप होगा ना उतनी मात्रा में ऑफेंस जाएगा। अगर थोड़ा भी पश्चाताप बाकी है, मतलब पश्चाताप की डिग्री इतनी नहीं है अपराध करने के बाद भी, तो भी वो क्या रहेगा, वो अपराध का क्या रहेगा, असर रहेगा। आप देखो इंद्र से हम समझ सकते हैं, इंद्र ने क्या किया, सबसे मतलब अब देखो दक्ष प्रजापति और इंद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं। दक्ष प्रजापति ने पहले क्या किया, शिव जी का अपराध किया, तो शिव जी का अपराध किया, माफी मांगा, उसके बाद फिर से नारद मुनि का अपराध कर दिया। फिर आप देखो इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपराध किया, तो बहुत कुछ चला गया उनके पास से। फिर वो जो एक ऋषि पुत्र था, वो इंद्र के लिए यज्ञ कर रहा था, पर वो क्या कर रहा था, अपने पूर्वजों को भी क्या कर रहा था, आहुति दे रहा था, असुरों को भी। तो इंद्र ने यज्ञ करते हुए व्यक्ति को तलवार से काट दिया, वो ब्राह्मण पुत्र था। तो पहले उसका अपराध किया, फिर उसका अपराध किया, और फिर उसका अपराध लास्ट में ले गया उसको उन्होंने। हालांकि ये सब तो विल ऑफ प्रोविडेंस था, पर उसको फिर वृत्तासुर को भी मारना पड़ा। समझ रहे हैं? कहने का भाव है कि भाई एक बार अपराध करेंगे ना, तो फिर वो श्रृंखला चालू हो जाएगी। एक अपराध, दूसरा अपराध, तीसरा अपराध, चौथा अपराध। रेपेंटेंस कंसेप्शन। अभी ये रेपेंटेंस कंसेप्शन क्या है? Madhurya Kadambini describe how to nullify the 10 offenses in the chanting of the holy name. The practice of repentance is mentioned as a remedial measure for the most 10 offenses. Most people are familiar with the terms of repentance. Occasionally one sees a religious advocate carrying a place reading,
sinner, repent, burn. Sinner, repent or burn. But what exactly repentance? Oxford Dictionary says repentance means to feel deep sorrow about one's actions, to wish one had not done it, and to resolve not to continue a wrongdoing. That is called repentance. Repentance मतलब हृदय से पश्चाताप होना और दूसरी बार वो ना करना, उसको क्या बोलते हैं? पश्चाताप। पश्चाताप की परिव्याख्या, परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से समझाया। यस, synonyms for word repentance are shame, regret, sorrow, sadness, embarrassment, grief, humiliation, guilt or remorse. Full repentance include all these moods and emotions. Such feelings combine to saturate and soften the heart of the repentant devotee. If upon committing an offense to the holy name, a devotee sincerely repents and thinking, I should not have done this, but I am so foolish that I have committed this offense, the Supreme Lord will excuse him on the basis of genuine repentance. For some offenses, additionally measures are required for nullification, but repentance is always necessary. Yes, and Sanskrit word for repentance is anutapa. It comes from root tapa, means heat, fever, sorrow, affliction, pain, mental and physical. Although Christian says that one will burn into hell if he does not repent for his sins, that repentance himself, which includes a certain degree of mental fever, actually burns up, eliminates sins and offenses from the heart. A downpour of tears often follows the fire of repentance. Genuine crying, which is part and parcel of the repentance, serves the further cleanse and purify the heart. If one genuine repentance, तो उसका ऑफेंस ही नहीं जाता, बट उसका हृदय क्या होता है? पवित्र होता है और शुद्ध होता है, और धीरे धीरे फिर वो अपराध नहीं करता है। ये बहुत महिमावान चीज है। यस, तो ये पूरा समझाया मीन्स ये नो है। सो हम क्या कर सकते हैं? पहले अपराध को ना करने के लिए बोले कि आपका चेंज द विजन। तो चेंज द विजन में 4 बातें बताई गई है। 4 सिद्धांत याद रखते हैं हम साधु निंदा से बचने का। ये 4 सिद्धांत पालन करेंगे तो हम कभी भी किसी भी साधु के प्रति अपराध नहीं करेंगे। 4 चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला क्या है? कल्टिवेटिंग द फाइंडिंग गुड नेचर, एक अच्छा स्वभाव का विकास करना। तो इधर बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त बुरा नहीं होता, मतलब पूरा बुरा, एब्सोल्युटली बुरा नहीं होता। कोई भक्त एब्सोल्युटली बुरा होता है क्या? किसी ना, सब में कोई ना कोई गुण तो होता ही है। तो वो गुण देखो और हृदय पूर्वक वो गुणों की सराहना करो। सराहना, प्रशंसा। और ये बहुत ही पावरफुल एंटीडोट होगा अगेंस्ट फाइन फोल्डिंग नेचर। यस, दूसरों में दोष देखने का ये सबसे, हम कैसे बच सकते हैं? देखो, हम कुछ ना कुछ तो देखेंगे, तो जनरली लोग कहते हैं ये गलत मत देखो, ये गलत मत देखो। वो तो आपको दिखेगा। दोष तो ये दोष मत देखो, अरे दोष तो दिखेंगे। क्या? अगर आप गुण नहीं देखोगे तो दोष दिखेंगे, कुछ तो दिखेगा। देखे बिना हम नहीं रह सकेंगे। यस, कुछ तो दिखेगा। तो क्या देखना है? गुण देखेंगे। तो गुण देखेंगे तो दोष अपने आप छुप जाएंगे। दूसरा है नो वन इज इटर्नल रफ। या शाश्वत रूप से कोई पापी हो सकता है क्या? है? Before passing judgment on others, one should always remember that every saint had a past. या जजमेंट पास करने वाले सोचना चाहिए कि हर संत का एक, बोलते ना, हाँ, पास्ट।
एक भूतकाल था। आगे वाल्मीकि मुनि, मृगारी, अजामिल, आगे आराध्य। आज कोई बोलेगा उनके बारे में, हरि बोल हो जाएगा उसका। एवरी सिनर एज अ फ्यूचर। जगाई मधाई आप देखो, फर्स्ट क्लास पापी थे। कितने? थर्ड क्लास नहीं, कितने? फर्स्ट क्लास पापी थे। पाप का दूसरा नाम थे बराबर पाप थे। भगवान के पार्षद है। या बोले कि एक क्षण में व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। क्या? एक क्षण में सारे दुर्गुण दूर हो सकते हैं। इसलिए पाप से नफरत करो, पापी से हेट द सिन नॉट द सिनर। यस, तो जजमेंट नहीं करना है और ऐसा सोचना है कि भाई क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। 931 भगवान बोलते हैं अपि से जो दुराचारो भजते मां अनन्यवाक साधुर्य संतव्य। बोले कि भाई कितना भी गलत क्यों ना करो, 4 नियम भी क्यों ना तोड़ रहा हो, पर फिर भी उसको क्या मानो? साधु, क्योंकि वो क्या मेरी आनंद भक्ति में लगा है। तो अर्जुन बोले पर नहीं शुद्ध हुआ तो बोल रहा हूँ क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धीरे धीरे शुद्ध होगा, चिंता मत करो। फिर क्या बताया? ट्राई टू सी कृष्ण एवरीवेयर। कृष्ण को हर बार हर चीजों में देखो कि देखो ये भक्त ने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये भक्त ने नहीं किया, ये भक्त ने नहीं किया। इसके माध्यम से कृष्ण ने मैं जो डिजर्व करता था और मेरे जो फल थे कर्मों के वो ही दिए हैं मेरे को। यस, किसको बोल? कृष्ण को हर बार देखना मतलब ये कृष्ण ऐसा नहीं। कृष्ण का हाथ देखना। यस, ये देखना ऐसा। चेंज द, चौथा क्या है? चेंज द एटीट्यूड। Turn the mind from bad to good, negative to positive. Suddenly you will find heaven on the earth. क्या देखो? अच्छी चीजें देखो, है ना? कि देखो ये भक्त क्या कर रहा है, क्या सुबह उठ नहीं रहा, पर ये देखो ये भक्त सेवा कर रहा है, भक्त बन गया, कृष्ण को भगवान मान दिया। तू गले में तुलसी माला, ऊपर तिलक धारण करे, धोती कुर्ता पहन दिया, प्रसाद खाता है, हो जाएगा। बस आधा पानी नहीं है और आधा पानी भरा हुआ है, मतलब दोनों ओर से देख सकते हैं, हमारे पे आधारित है। What is the use of reading Shastra and chanting Hare Krishna if one keeps an heavy life and full tongue? लेकिन क्या फायदा है महामंत्र करने का और शास्त्र पढ़ने का अगर हमारे क्या है दोष दृष्टि है और हमारी जो जीवा है वो क्या निंदा करती रहती है। Why do you maintain a vision of enemies and speak badly of others? हम क्यों ईर्ष्या और द्वेष की भावना से हम दूसरों के बारे में गलत बोले, है ना? तो इधर भी महाप्रभु के बारे में बताया कि महाप्रभु आएंगे वो व्यक्ति को लेने के लिए। तो क्योंकि हमारे पास थोड़ा कम समय है इसीलिए हम क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में इधर लिखा गया है। तो दूसरा अपराध क्या है? इक्वेट डेमिगॉड विद द लॉर्ड विष्णु, मतलब भगवान के नाम को इसके नाम के बराबर और स्वतंत्र समझना। तो उनका नाम उनके जैसा नहीं है, उनसे नीचे आता है। यस इधर लिखा है कि गृहस्थ वैष्णव मस्ट बी कन्विंस्ड दैट बाय वर्शिपिंग ओनली कृष्णा द वैष्णव और रिजल्ट विल बी अटेन्ड। मतलब उनके नाम के समान समझना। और दूसरा मतलब कि इन शॉर्ट ये दूसरा अपराध को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बता रहे हैं कि
कृष्णा पे तो विश्वास है, पर कृष्णा पे विश्वास होने के साथ साथ दूसरों पे दूसरे मतलब देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, और फिर उनमें श्रद्धा है, माला भी कर रहे हैं। तो ये क्या है? दूसरा नाम। इसको बोलते हैं कि नाम को समान समझना और इनको भी विष्णु के जैसा इक्वल पोटेंट, मतलब कृष्णा के जैसे ही समझना कि हाँ यार इसकी पूजा करूंगा तो भी सेम लाभ मिलेगा, और कृष्णा की पूजा करूंगा तो भी सेम लाभ मिलेगा। ये क्या है? अपराध है, दूसरा अपराध। वो स्वतंत्र समान भी नहीं है, स्वतंत्र भी नहीं है। वो ही है स्वतंत्र, यानी कि उनसे बड़े हैं या फिर उन्हीं से आता है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब। और फिर देखो, तो पहले का डिफरेंस क्या है? सर वैष्णवा, वैष्णव की सेवा करो, डोंट क्रिटिसाइज देम, अ डिवोटी ऑलवेज थिंक हिमसेल्फ अ फॉलन wretch, therefore he never envies or blasphemes anyone, rather he serves all living entities and help them to back to God। तो पहला क्या है? निंदा मत करो, डिफेंस, वही उपाय है। और अपराध हो तो क्या करो? क्षमा मांग लो और सेवा करो। दूसरे अपराध का सॉल्यूशन क्या है? वर्शिप श्री कृष्ण विद राधिका एज अ ब्यूटीफुल एब्सोल्यूट, द स्वीट एंजॉयर एंड द मर्सी मेकर ऑफ grudge, merry maker of grudge। A devotee never separately worship the demigods because he is fully cognizant with that all living entities, including the demigods, are eternal servants of Krishna and depend on him। ये दूसरा अपराध का सॉल्यूशन। तीसरा क्या है? गुरु की अवज्ञा करने वाला। The defense क्या है? One should show full respect to the spiritual master who initiate him into the holy name। A devotee will not violate order of his guru because he realizes that Krishna cannot be attained without guru कृपा। गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना मतलब वही जो आपको सिद्धांत बताया गया, जो आपको सेवाएं बताई गई है, और हम उसको अच्छी तरीके से पालन नहीं कर रहे। गुरु रेफर्स टू शिक्षा एंड दीक्षा बोथ। जनरली गुरु का नाम आता है तो हम दीक्षा गुरु सोच लेते हैं। इधर हमारे संप्रदाय में कहीं पे भी गुरु आए, शिक्षा और दीक्षा दोनों गुरु हैं। शिक्षा दीक्षा गुरु उनके प्रतिनिधि सारे लोग इसमें आ गए। गुरु उनके माध्यम से आपको बोलते हैं, तुम नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा? वही अपराध होगा। तो जनरल लोग समझते हैं गुरु अपराध मतलब वही जो गुरु बैठा है और गुरु ने बोला जा पानी लेके और मैं नहीं लाया, मतलब वो अपराध है। तो ये प्लेन वनीला अंडरस्टैंडिंग। उसको ये नहीं लगता है कि गुरु ने बोला ध्यान करो, 16 माला करो, 10 नाम अपराध से बचो, तो ये उसको अपराध नहीं लगता है। इसको ऐसा नहीं लगता कि ये गुरु हो गया। हाँ, कुछ कंडीशन होता है, बट फिर भी मैक्सिमम ट्राई कर सकता है। चौथा क्या है? वैदिक शास्त्र का प्रमाण को खंडन। वैदिक शास्त्र का प्रमाण का खंडन करना। One should sincerely praise the scripture revealing the glories of the holy name. Spiritual reality can be seen through the eyes of Shastra. Understanding this, a devotee honors, study, worship, distribute and sacrifice। अगर चौथा अपराध हो गया तो क्या करना चाहिए? भागवत की पूजा करनी चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और डेली पढ़ते रहना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए, उसको वितरण करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? चौथा अपराध दूर हो जाएगा। पांचवा अपराध क्या है? काल्पनिक समझना। One should completely convince that holy name is eternally situated on the pure transcendental platform। A devotee practically experiences inconceivable potency of the holy name। Yes, उसको कभी भी बोर्डम नहीं लगेगा, हमेशा हरि नाम कॉन्स्टेंटली। मतलब देखो, पहला अपराध मतलब इन शॉर्ट आप सारे अपराधों का एक ही सॉल्यूशन है, निरंतर हरि नाम लेना। जब ये निरंतर हरि नाम लेता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कंप्लीट प्रक्रिया क्या है पता है? माधुरी कादम्बिनी के अनुसार पूर्ण प्रक्रिया है कि आप वैष्णव से माफी मांगो। हाँ, माफी मांगो,
वैष्णव माफ कर दे, और फिर आप निरंतर आप हरि नाम लेते हो। मतलब माफी मांगने के बाद 32 माला 48 माला ऐसे एक हफ्ते तक वो मानसिकता को दूर करने के लिए व्यक्ति करेगा, तब जाके उसके जो सीड्स है ना, सीड्स मतलब जो अपराध के बीज, पहला है कि ऊपर से सारा घास निकाल दिया हमने माफी मांग, और बीज अंदर पड़े, तो बीज को निकालने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, निरंतर हरि नाम लेगा, और उससे वो बीज निकलेंगे, फिर उधर से फिर वो आएगा। ये कंप्लीट प्रक्रिया है, निरंतर हरि नाम लेना। तो सारे ऑफेंस का मोरल बस यही है कि ध्यान पूर्वक हरि नाम। छठा क्या है, अर्थवाद का आरोप। One should believe that explanation and holy name given by sentient scripture. Devotee does not interpret a holy name because he is well versed in नाम तत्व। मतलब नाम की जो महिमा है शास्त्रों में अर्थवाद कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, मिस इंटरप्रेट करना, शास्त्रों को गलत तरीके से समझना और समझाना, ये तो उसमें बोले कि नाम तत्व को क्लियर करना चाहिए, और साधु और गुरु और शास्त्रों पर विश्वास होना चाहिए। सातवां क्या है, रूट आउट ऑफ द डिजायर टू कमिट sin. A devotee never considers sinning on the strength of the chanting. भले देर इतना मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हाँ कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, पर वो ये सोच के नहीं कर रहा है कि मुझे हरि नाम बचाएगा। हाँ मैं पाप कर रहा हूँ तो मुझे भगवान अलग से सजा दे और मैं उसी के योग्य हूँ, तो हो सकता है कि उसका नाम जब खराब ना हो। पर जब व्यक्ति सोच के अपराध करता है ना कि अभी कर लो बाकी तो हरि नाम करूँगा तो अपराध मिट जाएंगे, फिर वो गया, फिर उसको हरि नाम सुनाई नहीं देगा, उसका सुनाई देना बंद हो जाएगा। मतलब जो जनरली पाप कर्म करते हैं ना, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों का ऐसा होता है, हरि नाम सुन नहीं पाता व्यक्ति। जैसे पाप कर्म करते हैं हरि नाम सुन नहीं पाता, सुन ही नहीं पाएगा, क्या करेगा, अपराध के इफेक्ट साथ में आता है। आठवां अपराध क्या है, कर्मकांड के समान संबंध। तो बोले कि देखो हरि नाम जो है ना वो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए है, बाकी सारी चीजें भौतिक संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए, पर लक्ष्य क्या है, प्रेम प्राप्त करना। वो किससे होगा, हरि नाम से होगा। इससे अपने आप को पूरी कन्विंस करना, ये कोई पुण्य कर्म नहीं है, हरि नाम से प्रेम मिलता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है और आध्यात्मिक जगत में हम जा पाते हैं। बाकी अन्य कोई चीज और अन्य कोई उपाय नहीं है। हरि नाम और भक्ति, हरि नाम भागवत, ये सब जो भी रूप गोस्वामी के द्वारा और महाप्रभु ने जो 64 भक्ति के हम बताए, उससे खाली मेरे को क्या मिलेगा, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए वो चीज है। बाकी सारी चीजें भौतिक संसार में भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने। नौवां क्या है कि श्रद्धालु को प्रचार करना। तो वही है कि आप हरि नाम तो बता सकते हो, और जब तक उनका श्रद्धा विकास नहीं हुआ है, 4-6 महीना नहीं हुआ है, तब तक क्या करो, उनको हरि नाम बोल लेते रहो, पर महिमा मत बताओ। और 10वां अपराध का क्या है कि भाई one should chant attentively with full surrender to the holy name. Sincere devotee has full faith in the holy name. He always tries to improve his chanting by pulling out of the weeds of illicit desires. The determined sadhaka enthusiastically moves on the path of devotion by surrendering moment to moment of the Lord's attractions. तो कहने का भाव है कि भाई जो व्यक्ति 10वां अपराध से बचना चाहता है वो क्या करे, ध्यानपूर्वक माला करे, क्योंकि ध्यानपूर्वक माला 10वां नाम अपराधी अन्य 9 अपराध के कारण है। हम ध्यानपूर्वक माला नहीं कर रहे, यही मेन कारण है। तो ध्यानपूर्वक नाम जप करें और धीरे धीरे क्या करें, भौतिक इच्छा रूपी जो बीज है उसको निकाले। यस, तो ये 10 नाम अपराध थे और उनसे बचने के उपाय थे। और अभी जस्ट खाली लास्ट सेक्शन कि भाई
तो निरपराध जो माला करता है उसके क्या लक्षण होते हैं? बोले निरपराध जो माला करता है उसके 4 लक्षण होते हैं। 4 लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो रहे, मतलब कि हमने निरपराध माला की है। सबसे पहले नेचुरल ह्यूमिलिटी बॉर्न ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक भोग करने की इच्छा जा रही है और एक स्वाभाविक विनम्रता है, ये पहला लक्षण। दूसरा है प्योर कंपैशन अनकंबर्ड बाय एनवी, मतलब शुद्ध दया है। दया मतलब कि ईर्ष्या नहीं होना। ईर्ष्या का विपरीत क्या होता है? दया। और दया से क्या करेंगे हम? प्रचार करेंगे। तीसरा क्या है? अ प्योर हार्ट फ्री फ्रॉम मंडेन फॉल्स ईगो, कोई भी भौतिक जितने भी ऐश्वर्य है, पोस्ट पोजीशन है, उसका कोई भी अहंकार नहीं है। और चौथा क्या है? रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, तो सभी की वो सभी का सम्मान करता है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, सभी को अपने अपने लेवल के अनुसार। यस, ये 4 जो है निरपराध माला कर्तव्य के लक्षण हैं। आगे के प्रवचन में, आगे के हफ्ते में हम क्या अनर्थों के बारे में देखेंगे और नामाभास के ऊपर हम देखेंगे। आज हमने क्या किया? नाम अपराध के बारे में देखा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।